So let us discuss today about the graphical representation of average and instantaneous rate. So we are discussing today how we can calculate average and instantaneous rate of a chemical reaction with the help of the graph. So to explain about it, let us consider a general reaction in which R is the reactant R is converted into product P. So for the general reaction, average rate equal to minus change in concentration of the reactant divided by change in time delta T. So in terms of product average rate, we have to put positive signs, change in concentration of the product P divided by change in time delta T. Similarly, instantaneous rate, according to our previous video, instantaneous rate for this reaction minus dr divided by dt, and for the product plus dp divided by dt. So what is the significance of negative sign here? Negative sign signifies that when time increases, concentration of the reactant decreases, and positive sign signifies here when time increases, concentration of the product increases. Now let us plot a graph. Let us plot a graph in which concentration of the reactant is plotting against the time. So concentration of the reactant R is plotting against the time. It is, we know that when time increases, concentration of the reactant decreases. So when time increases, concentration of the reactant always decreases. So always we have this type of graph. So this graph indicates that time and concentration of the reactant inversely related. That means when time increases, concentration of the reactant decreases. So this is the origin of the graph. So हम लोग consider किया at time t1. At time t1, let us consider concentration of the reactant. Concentration of the reactant is how many? Concentration of the reactant considered as C1. And suppose time is changes to T2, increases to T2. When time is increases to T2, then concentration of the reactant decreases to C2. Concentration of the reactant not increases with increase in time. Concentration of the reactant decreases. So when time increases from T1 to T2, concentration of the reactant decreases from C1 to C2. When time T1, concentration of the reactant is C1. When time T2, concentration of the reactant is C2. So according to this graph, C2 is smaller than C1. So how many change in concentration of reactant? Concentration of the reactant delta R. So delta R how can you calculate? Delta R हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? C2 से C1 क्या करना पड़ेगा? हम लोग माइनस करना पड़ेगा. डेल्टा R इक्वल टू C2 माइनस C1. डेल्टा R इक्वल टू फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन. So how many change in time here? Change in time also delta T. Delta T how can you calculate? Delta T equal to T2 minus T1. So delta T equal to T2 minus T1. Similarly, delta R equal to C2 minus C1. So for this graph, then what is the relation to find out average rate? Average rate from this graph, average rate equal to delta R divided by delta T. So how can you find out delta R? Delta R equal to C2 minus C1. And how can you find out delta T? T2 minus T1. So देखो ये जो रेट है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ नेगेटिव साइन होने से भी अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही निकलेगा. क्यों पॉजिटिव निकलेगा? क्योंकि C2 स्मॉलर देन C1. C2 जब C1 से स्मॉलर होगा, ये दोनों को माइनस करने से नेगेटिव आएगा. नेगेटिव अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. दैट मीन्स रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ भी हम लोग को फाइनली पॉजिटिव ही मिलेगा. सो एवरेज रेट निकालने के लिए, सो दिस इज क्या क्या गिवन होना पड़ेगा क्वेश्चन में? C2 एंड C1 गिवन होना पड़ेगा, एंड T1 एंड T2 गिवन होना पड़ेगा. सो सिमिलरली हाउ कैन यू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम?
for this reaction. Instantaneous rate means concentration of the reactant at a particular instant of time. Similarly, concentration of the product at a particular instant of time. Let us consider at a particular instant of time dt. हम लोग consider किया after time dt it is a particular instant of time. हम लोग क्या किया, ग्राफ का ऊपर में एक पॉइंट कंसिडर किया और ये पॉइंट में हम लोग अभी क्या बनाना है, ये पॉइंट में हम लोग एक टेंजेंट बनाना है लाइक दिस. हम लोग ऐसा टेंजेंट और टेंजेंट का टेंजेंट का ऊपर में हम लोग ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हम लोग यहाँ से अभी क्या करना पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप. सो instantaneous rate for this graph after instantaneous rate after time dt, instantaneous rate at a particular instant of time dt equal to, in terms of reactant, dr divided by dt. This is equal to slope of the graph. Why slope is negative? Because when time increases, concentration of reactant decreases, so slope is negative. How can you find out the value of slope? स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर को, ए बी इज द परपेंडिकुलर को हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा बाय द बेस, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्लोप. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बेस से. ये जो परपेंडिकुलर का वैल्यू कौन सा एक्सिस से मिलेगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों को वाई एक्सिस से मिलेगा. ये पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देना है, ये पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देना है. ये दोनों पॉइंट का बीच में जो डिफरेंस होगा ये हो गया ए बी वैल्यू. और बी सी कैसे मिलेगा, ये बी पॉइंट को हम लोग यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, सी को हम लोग यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा. ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज होगा बी सी. सो स्लोप इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. सो इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग ग्राफ का ऊपर में, कर्व का ऊपर में पर्टिकुलर एक पॉइंट लेके वहाँ क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. इसके बाद ऐसे स्लोप बनाना पड़ेगा. तो वैल्यू ऑफ स्लोप इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दिस रिएक्ट. So this is one more graph in which concentration of product is plotting against the time. So we know that when time increases, concentration of the product increases. When time is equal to 0, concentration of product also equal to how many? 0. When time increases, concentration of the product increases. For a chemical reaction, we have this type of graph. That means when time increases, concentration of product increases. Time and concentration of product directly related. So हम लोग consider किया at a particular time T1, concentration of the product is how many? C1. Similarly, time increases to T2. Then when time is increases to T2, concentration of the product increases to how many? Concentration of the product increases to C2. So देखो, in case of product C2 greater than C1, but in case of reactant C2 is smaller than C1. Remember it. So this is delta P. So how can you find out delta P? Delta P equal to C2 minus C1. C2 greater than C1 in case of product. So this is delta T. How can you find out delta T? Delta T equal to T2 minus T1. So what is the average rate in terms of product? Average rate equal to plus delta P divided by delta T. So how can you find out delta P? Delta P equal to C2 minus C1. Delta T equal to T2 minus T1. So this is the relation to find out average rate. So average rate for a particular reaction find out करने के लिए T1 टाइम में C1 गिवन होना पड़ेगा, T2 टाइम में C2 गिवन होना पड़ेगा. Similarly, in terms of product, इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करना है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम dt टाइम में हम लोग क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करना है. सो हम लोग सिमिलरली हम लोग क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का ऊपर में, तो ग्राफ का ऊपर में हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा. ग्राफ को कंटेक्ट करके ये पर्टिकुलर
पॉइंट को कांटेक्ट करके ऐसा टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट। और अभी हम लोग इसमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लाइक दिस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle. Suppose this is AB or this is C, point C. So now instantaneous rate equal to dP divided by dt. So this is equal to slope of the graph. So how going to find out value of slope equal to perpendicular AB divided by BC. So in terms of product, slope equal to the instantaneous rate. Slope here positive. Why positive? Because when time increases, concentration of the product is increases. So to explain about the instantaneous and average rate, then one example number 4.1, it is solved in your textbook. So in this example, from the concentrated butyl chloride, it is an organic compound, at different times given below, calculate the average rate of the reaction. This is the reaction where butyl chloride reacts with water, then produces butanol and HCl. During different time intervals, at different times, these are times, and this is the concentration of the butyl chloride का concentration दिया हुआ है in moles per liter. At the beginning of the reaction, how many concentration of the reactant? Butyl chloride is the reactant. How many? 0.1 moles per liter. After time 50 second, time given in second, after 50 second, 0 to 50 second, जब टाइम हो गया 50 सेकेंड, कंसेंट्रेशन बिकम्स 0.0905. 0.10 बिगिनिंग में था, रिएक्शन का बिगिनिंग में ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर. लेकिन जब टाइम बढ़ा फिर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट का, क्योंकि विथ इंक्रीज इन टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस. फिर 100 सेकेंड का बाद फिर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है ब्यूटाइल क्लोराइड का, 150 सेकेंड का बाद दिया हुआ है. So these are the different time intervals. At the different time intervals, concentration of the reactant, concentration of butyl chloride in mole per liter is given. So from this information, we can determine the difference in the concentration over different intervals of time, and thus determine the average rate by dividing delta R by delta T. So हम लोग ये जो डाटा गिवन है, ये डाटा से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकता है, एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकता है एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. सो हम लोग ये दिस कैलकुलेशन इज शोन इन द नेक्स्ट टेबल नंबर 4.1. दिस इज द टेबल नंबर 4.1. सो फर्स्ट इनिशियल कंसेंट्रेशन जब टाइम T1 इक्वल टू 0, फर्स्ट ये जो निकल रहा है एवरेज रेट कौन सा टाइम इंटरवल में, 0 to 50 मिनट का बीच में, 50 सेकेंड का बीच में, 0 to 50 सेकेंड का बीच में क्या निकल रहा है, एवरेज रेट निकल रहा है. फिर 50 सेकेंड टू 100 सेकेंड का बीच में एवरेज रेट निकल रहा है. फिर 100 to 150 का बीच में एवरेज, ऐसे डिफरेंट एवरेज रेट निकला हुआ है. जैसे कि फर्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट किया है, तो फर्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट किया है. सो फर्स्ट एवरेज रेट टेबल 4.1 में कैलकुलेट किया है जब टाइम T1 इक्वल टू 0, देन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट C1 इक्वल टू हाउ मेनी, 0.1 मोल्स पर लीटर. व्हेन टाइम इज इंक्रीजेस टू 50 सेकेंड, देन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस टू हाउ मेनी, 0.082 मोल्स पर लीटर. सो ये जो टाइम इंटरवल है 0 to 50 सेकेंड, इसी का ये टाइम इंटरवल में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है. सो एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट डेल्टा आर इक्वल टू C2 minus C1 divided by T2 minus T1. So put the value of C1 equal to how many, 0.082, C1 equal to how many, 0.1, and T2 equal to how many,
T2 equal to 50 minus 0. So now, at 50 second, concentration of the reactant C2 equal to, this is equal to 0.0905 moles per liter. So this is wrong. So minus C2 equal to how many? 0.0905 minus 0.1, then T2 50 0. So इनको माइनस करने से माइनस निकलेगा माइनस 0.0095. So this is 50. So minus minus becomes plus, then after the calculation it becomes 9.5 into 10 to the power minus 3, decimal point यहाँ से यहाँ ले गया. So this is 50. Then 9.5 divided by 5, 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 1. So divide करने से 1.9 into 10 to the power 4 unit is moles per liter per second. This is the average rate in which time interval 0 to 50 second. So इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. सो देखो ये ग्राफ में जहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्लॉटिंग अगेंस्ट द टाइम, और ये ग्राफ में 600 सेकेंड टाइम का बाद इंस्टेंटेनियस रेट निकल के रखा है. कितना सेकेंड का बाद? 600 सेकेंड में क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके बाद स्लोप बनाया. ठीक है, कितना सेकेंड के बाद? 600 सेकेंड के बाद. और ये वैल्यू कैसे मिलेगा? इसको हम लोग यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा. यहाँ दिस इज सपोज दिस इज C1 और इसको यहाँ ज्वाइन कर देने से ये हो गया C2. सो ये 600 सेकेंड के बाद इंस्टेंटेनियस रेट टेक्स्ट बुक के में निकल के दिखाया है. ये निकला है, ये देखो. दिस इज आफ्टर R instantaneous at how many seconds? 600 second equal to C2 minus C1 divided by T2 minus T1. ये C1, ये जो C2 वैल्यू ग्राफ से लिया है और C1 वैल्यू भी ग्राफ से लिया है, और ये T2 भी ग्राफ से मिला है, 400 भी T2 भी ग्राफ से मिला है और T1 भी ग्राफ से मिला है. C2 वैल्यू ग्राफ से मिला. C2 कहाँ से? ये है C2. दिस इज ये पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करने से दिस इज C2, और इसको जब यहाँ ज्वाइन किया दिस इज C1, तो C2 माइनस C1, और ये पॉइंट को जब ला के यहाँ ज्वाइन किया दिस इज इक्वल टू T1 इक्वल टू हाउ मेनी? 400. दिस इज T1 400 एंड T2 इक्वल टू हाउ मेनी? 800. इसलिए यहाँ देखो कोई दिस इज 800 माइनस 400. So after the calculation this, similarly ग्राफ प्लॉट करके इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन किया 250 सेकेंड का बाद, 350 सेकेंड का बाद, 450 सेकेंड का बाद. सो इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. विदाउट ग्राफ इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन नहीं कर सकता है. सो दिस इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट.